पता है, उसके सामान की जगह पत्थर डाल के दे दिया मगन वालों ने। एलईडी टूटी भेज दी, टूटी एलईडी भेज दी यार, रास्ते में
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਾਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਮੁੜਕਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਜਰੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਢਾਹਤਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਇਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਲੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟਿਕਟ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇਕੱਠੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਬਸ 2-4 ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਵੇਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਘਟਦੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰੇ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਕਰ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ Okay, I don't see any answers coming. I think people are still busy with their work and they are not paying attention to me at all. So, अगर आप यूरोपा मुंडो के बारे में जानते हैं तो प्लीज मुझे चैट पे लिखिए. I can see some answers coming. Okay, for Europe, yes, we do Europe, but we also do other destination, Cosmos Hospitality, group fixed departures. Exactly, that's what we do. One query is going through from Trip House. Great. Maybe after this training, you will be able to close it also. Yes, I know already booked Europa Mundo. Okay, but don't know how to use. Okay, that's wonderful. Thank you so much for answering to my questions. And I think, Ashish, shall we start now? In the meantime, we'll have more people joining in maybe. Ashish, you tell me when I'm good to go, okay? Can you all see my screen? Ashish, okay, yes, we can start. Okay, great. So thank you so much. Thank you for having me here for this training today. I'm Nabanita. I'm from Europa Mundo Vacations, and I would like to thank Ashish and Faizan from Akbar Travels for inviting me to do this training today for all of you. Now, as some of you replied that you have heard about Europa Mundo, but you exactly don't know how to use the system, or maybe you know what we do, but you have never used us. So today in this training, I'm going to take you through the product. And I will tell you what are the USPs. I will show you the website, which is the main tool of Europa Mundo product. And then whatever questions you have, you can ask me. You can unmute and ask me, or you can write it on the chat box. And after we finish this session today, I'm going to take your questions. Okay. So before I start, I would like to request each one of you to please be on mute so that our session doesn't get disturbed. And I would really like to thank all of you for coming today, for joining this training session. I know Saturday, we are already in the holiday mood. The next weekend is here, and you have taken out time for me. So thank you so much for that. So before I tell you anything, let me introduce myself. I am Nabanita. I am based out in Calcutta, and I look after the Eastern Zone, as well as I'm the commercial coordinator for Europa Mundo Vacations. I have joined since it started in India, so it's already been 8 years with this company. So this is my team, and I have my country head Aparna Chaturvedi. I have my other colleagues Roxanne Patel from West. I have Achal Rastogi from North, and Madhuri Nair is based out in Chennai. She handles the South India market for us. We are going to do this presentation partly in English and partly in Hindi. If you want me to do it only in English, please write it in the chat box, because
I think we have people joining in from different corners in India, and maybe you are not comfortable in Hindi. So if you have anything like that, just tell me that, to continue in English, Hindi. Okay, perfect. So I will do it in Hindi and English both, because some of you may not understand Hindi. I know somebody has joined us from maybe Guwahati, so you may not be very comfortable. Okay. So we guarantee tours in several languages. So what we do? So we do coach tour. We do fixed departures. We conduct coach tours. We guarantee tours in several languages. We have tours in Spanish, Portuguese, English, Arabic, Japanese, and Mandarin. So ये company it's not a new company. Okay, हम लोग भले ही इंडिया में बस 8 ही साल हुए हैं हमको, but as a company, we are 30 years old. We are headquartered in Madrid. We are headquartered in Madrid, and when we started, we were selling mostly tours in Spanish language. But in the year 2015, we became a JTB group of company, and तभी से हम लोग अपने सारे tours इंग्लिश में भी हमने सेम कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। एंड जितने भी देश में इंग्लिश बोला जाता है, हम सारे देश में प्रेजेंट है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, we have our presence in Myanmar. India is one of the biggest market for Europa Mundo currently. We are sharing more than 50% of the passengers that we have in the global market. So we are the only travel agency in the world which is affiliated to WTTC, and we are also a member of even WTO. When we started in 2016, I remember we had only 80 itineraries. बट अभी हमारे पास 500 के ऊपर आइटिनरीज है। हमारे टूर 17,500 से भी ज्यादा हमारे पास गारंटीड डिपार्चर्स है, और हमारे नए सीजन के लिए कुछ नए रूट्स लॉन्च होने वाले हैं, एंड उसके बाद वी विल हैव मोर देन 700 टूर्स टू ऑफर टू आवर ट्रैवल एजेंट्स. We are the largest coach tour operators in Europe, and we cover 68 countries around the world with more than 150,000 passengers traveling with us every year. और हमारा जो मेन फोकस है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम मेन शहरों को कवर करें यूरोप में। हम बहुत ऐसी छोटी छोटी जगहों में जाते हैं जो कि काफी पॉपुलर नहीं है फॉरेन टूरिस्ट के बीच, लेकिन दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वाइंट विलेजेस और अ वेरी स्मॉल टाउन which is famous amongst the local tourists. Because हम कोच में ये टूर करते हैं, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम छोटे शहरों में जा सके, हम वो छोटे शहरों में रुके, आपको थोड़ा कॉफी ब्रेक या टॉयलेट ब्रेक उस शहर में हम दे, and then we continue our journey. So instead of making a stop on a highway in a service station or petrol station, we take you to a small quaint town and we give you a half an hour, 40 minutes, 1 hour break there. You get a chance to enjoy your coffee, or enjoy your technical stop there, and we continue our journey. And the last but not the least, the most important point is the quality and price ratio that we have maintained. So हमारे जो products होते हैं वो काफी affordable होते हैं, and इसी reason से इंडिया में यूरोपा मुंडो काफी जल्दी popular हुआ है. Okay, of course with your support and with your love, but this is one of the reason. So मैंने ये already बता दिया है आपको. We are the only company affiliated to WTTC. We are a member of UNWTO. We are also an UN Global Compact company, and we are a JTB group of company. JTB as in Japan Travel Bureau, जिसके अंदर कोनी आता है, जिसके अंदर टुमलार आता है, जिसके अंदर जापान एयरलाइंस आता है. So we are a part of a big brand, and with a big brand comes the commitment. So you can completely trust this to us, even if you're using us for the first time. So you can just have this trust on this product. अभी हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट की यूएसपी क्या क्या है, बिकॉज कोच टूर्स तो बहुत कोई कर रहा है, यूरोपा मुंडो को आप क्यों चुनेंगे? तो इसी के लिए मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताती हूँ कि क्यों आपको मेरा प्रोडक्ट what, or maybe what features makes us unique in the market. So हम भले ही ग्रुप टूर करते हैं, हम भले ही कोच टूर्स करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज है जो कि और कोई आपको ऑफर नहीं कर सकता है.
क्या है वो फ्लेक्सिबिलिटीज, लेट मी टेल यू। The first one is stop yes. What is stop yes? Stop yes मतलब आपको हमारे वेबसाइट पे जब आप ब्राउज करोगे, आपको ऐसे कुछ आइकन्स दिखेंगे हमारे वेबसाइट में। तो हर एक सिंबल का एक मीनिंग होता है। तो स्टॉप यस का ये मतलब है कि आप हमारे जो भी टूर आप सिलेक्ट कर रहे हो जिसमें ये वाला आइकन है, यू कैन एक्चुअली टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, यू कैन टेक अ स्टॉप and you can continue your journey or your tour after the stop. So let me give you an example. Suppose आप हमारा कोई इटली, स्विस, पेरिस का टूर देखते हो और क्लाइंट का जो है उनका स्विट्जरलैंड में कोई रिलेटिव है, या फिर उनको स्विस थोड़ा और अच्छे से देखना है। तो आप क्या करोगे, आप पूरा टूर खत्म करोगे, उसके बाद आप उनको वापस स्विस लेके आओगे, या फिर आप ऐसा कोई टूर ढूंढोगे जो कि स्विस से शुरू होगा और कहीं और जाके वो खत्म हो रहा है। हमारे इस वाले ऑप्शन में इटली, स्विस, पेरिस में स्विस इन बिटवीन है, लेकिन आप फिर भी ये टूर चूज कर सकते हो, बिकॉज आप जब स्विट्जरलैंड में ये कोच आती है तब आप ये कोच को छोड़कर आप एक स्टॉप ले सकते हो। आप अपना जो मर्जी आप कर, आपने लाइक किसी फ्रेंड के पास आपको रुकना हुआ, वो आपने कर लिया, या फिर आपको कोई FIT पैकेज करना था, या फिर स्विस आपको अच्छे से कवर करना था, वो आपने कर लिया। एंड आफ्टर अ वीक व्हेन माय नेक्स्ट कोच इज बैक टू स्विट्जरलैंड, बैक टू ज्यूरिख, you hop onto that bus and you continue for the remaining portion which is Paris. तो आप कोई डेविएशन लिए बिना ही, आप डेविएशन तो ले रहे हो बट यू आर नॉट चेंजिंग एनी सिटीज, यू आर टेकिंग अ ब्रेक इन द एग्जिस्टिंग आइटिनरी एंड यू आर ज्वाइनिंग बैक द टूर। ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज हमारे पास हर हफ्ते डिपार्चर होता है, राइट? हमारे पास मई में भी 4 डिपार्चर है, दिसंबर में भी 4 डिपार्चर है। तो आपके पास मैक्सिमम टूर्स में ये स्टॉप यस का ऑप्शन रहता है, जहां पर यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग आइटिनरी। सो दिस इज वन एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? हमारे कुछ टूर्स रोटरी टूर्स होते हैं ना। रोटरी टूर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक शहर से ये टूर शुरू करते हैं और सेम उसी शहर में आफ्टर अ वीक वी फिनिश द टूर। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। हमारा एक टूर है जो प्राग से शुरू होता है, प्राग के बाद वो आता है वियना आता है, नहीं, प्राग से वो इंसब्रुक आता है, इंसब्रुक से किट्सबुहेल आता है, किट्सबुहेल से वो वियना आता है, फॉर वियना से बुडापेस्ट एंड बैक टू प्राग। सो दिस इज अ प्राग टू प्राग आइटिनरी, but when we do an airfare from Delhi or maybe from Bombay, we don't get good airfares to Prague. So what we can do instead, we can start the tour from Vienna. Okay, the minute you select Vienna as your starting city, now the tour will be from Vienna to Vienna. It will no longer be from Prague to Prague. इसका मतलब ये है कि आप कोई भी सिटी को अपना स्टार्टिंग सिटी सिलेक्ट कर सकते हो और वही आपका ओरिजिन सिटी हो जाता है, वही आपका स्टार्टिंग डे ऑफ द टूर होता है। अब आप कोई भी पॉइंट या कोई भी एक्टिविटी मिस किए बिना यू कैन डू द सेम टूर but from the city of your choice. So that is the advantage of a rotary tour. But हमारे पास बहुत ही कम rotary itineraries है. Most of the itineraries are regular itineraries. The last but the most important flexibility tool that we have is this sector yes. सेक्टर यस मतलब क्या है? आपको अगर पूरा टूर नहीं चाहिए, अगर आपको बस एक पोर्शन चाहिए आउट ऑफ अ लॉन्ग से 14 डेज आइटिनरी, अगर आपको बस 4 दिन चाहिए तो आप वो भी हमसे ले सकते हो। You don't have to buy the entire tour from us. You can buy as small as 1 day. And as I said, there are no minimum nights. You can take as small as 1 day. So this is the biggest advantage of this tour. Usually group tour जब आप हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ग्रुप यानी तो फिक्स्ड होगा, हम तो कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम ये अगर मेरा क्लाइंट का कुछ दूसरा रिक्वायरमेंट है तो हम मैच कैसे करेंगे? तो अगर आपको पूरा टूर नहीं मैच कर रहा है, एक पोर्शन मैच कर रहा है, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। अगर आपको सपोज क्लाइंट पहले यूरोप गया है, उसको बस 2-3 सिटीज ही करनी है, उसको पूरा लाइक टिपिकल जैसे टूर होता है वैसे नहीं करना, तो आप वो ऑप्शन हमसे ले सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम आपको जो पोर्शन आप नहीं ले रहे हैं उसका जस्टिफाइड रिडक्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक 100 यूरो 150 यूरो का हम रिडक्शन दे दिया। अगर आप लंदन में नहीं लेंगे तो आपका रिडक्शन ज्यादा होगा।
अगर आप इटली में नहीं लेंगे तो आपका रिडक्शन कम होगा, तो यू गेट अ जस्टिफाइड रिडक्शन. Okay. Now, the next, but the most, I would say, I mean, this is what I'm repeating because all of these features are so unique to Europa Mundo that, I'm repeating myself. So, the next USP of these products are we do not cancel. All the departures that you see on our tour, on our catalog, or on the brochure, or on the website, they are 100% operational. हम कोई भी departure cancel नहीं करते हैं. यूरोप के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, अगर आपके पास बस सिंगल पैसेंजर है तो भी हम ये गारंटी देते हैं कि हमारा डिपार्चर ऑपरेट होगा. So this is the biggest advantage of this product. And then we have this feature. In our tours, we do not have compulsory tipping. Okay. If your clients are happy, they want to pay tips, they can pay tips. Otherwise, there is no such compulsion that they have to pay $2 or €2 per person per day. But for US, Canada, Mexico, Cuba, Jordan, Egypt, tipping is something additional. You have to pay additionally $5 approximately per person as tips. But अगर आप यूरोप जा रहे हैं, जापान कर रहे हैं, साउथ कोरिया कर रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ नहीं ऐड करना है as tips. Now we will talk about the advantages of Europa Mundo. Why choose us? Why not, XYZ? Why us? So let me explain this in 10 points. More than 500 tours to choose from. तो आप जब यूरोपा मुंडो का प्रोडक्ट देखते हो, आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, आपके पास बहुत सारे टूर्स की ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उसमें से कोई भी एक डिपार्चर चूज कर सकते हो. तो यू हैव वाइड वेराइटी ऑफ डिपार्चर डेट्स ऑल्सो. अगर क्लाइंट का मई में नहीं होगा, मे बी मे लास्ट वीक में होगा, सो एवरी वीक वी हैव डिपार्चर, सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. गारंटीड डिपार्चर्स, हमारे सारे टूर्स 100% ऑपरेशनल होते हैं. सो दिस इज वन सच रीजन, बिकॉज बहुत ऐसे सीरीज ऑपरेटर है जो कि आपको बोलते हैं कि मे बी वो आपको डिस्प्ले ना करे एट द टाइम ऑफ गिविंग एन एडवर्टाइजमेंट, बट उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि मिनिमम वी नीड 20 people, and if you don't have 20 people, they will either merge it with a different group or they will cancel and refund the money. But with us it's not there, because अभी क्या होने लगे हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादातर टिकट्स नॉन रिफंडेबल्स आने लगी है. अगर आप रिफंडेबल टिकट्स लेते हो तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. तो क्लाइंट के पास वीजा है, उसको पता है कि मैं जा रहा हूँ, तो बहुत टाइम ना क्लाइंट अपना नॉन रिफंडेबल टिकट से खरीद लेता है. तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि क्लाइंट नहीं जा पा रहा है, तो फिर तो ये पूरा पैसा चला जाएगा, राइट. बट हमारे पास ये गारंटी है कि हमारे टूर्स डेफिनेटली ऑपरेट करेंगे. अच्छा, उसके बाद क्या पॉइंट है, लास्ट मिनट्स बुकिंग्स आर आल्सो एक्सेप्टेड. तो हमारे वेबसाइट पे 96 आवर्स पहले तक हम लोग अवेलेबिलिटी दिखाते हैं और ऑफ मोस्ट ऑफ आवर आइटिनरीज. तो अगर आपके पास ऐसा कोई बुकिंग आया है जहां पर क्लाइंट का वीजा बहुत ही लास्ट मिनट पे लग के आया है, तो आप क्लाइंट को यूरोपा मुंडो टूर सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज उतनी लास्ट मोमेंट में अगर आप एफआईटी भी करोगे वो बहुत एक्सपेंसिव जाता है, और ग्रुप तो बाकी किसी का आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला है. लेकिन हमारे पास ये एडवांटेज है कि आप लास्ट मिनट तक हमारे पास बुकिंग दे सकते हो. The reason being we handle huge volumes of passengers. तो हमारा जो इन्वेंट्री होता है वो काफी ऑप्शंस हमारे पास होती है, and that is the reason why we can accept last minute bookings, though this is not something that we want you to do always. As an exception you can do. Okay. Now the next point is there is no age restriction for children. Children of any age can travel with us. बहुत सारे कोस्टर ऑपरेटर ऐसे हैं जहां पर एक सर्टेन एज के नीचे अगर बच्चे हुए तो वो ट्रैवल नहीं करेंगे. अभी मम्मी पापा घूमने जाएगा थोड़ी ना बच्चों को घर में रख के जाएगा, हॉलीडे तो सबके लिए है. So that is the reason why Europa Mundo has decided, because we're a family company, we do not put any age restriction. Children of any age can travel with us. No compulsory tipping. So this is one such advantage why you should choose us. Because जब आप कोई भी दूसरी कंपनी के साथ जाते हो, आपको €4 नहीं तो €3 तो मिनिमम पे करना ही होता है. अगर अगर 4 लोगों की फैमिली जा रही है 14-15 दिन के लिए, एंड इफ यू हैव टू बजट लाइक €3 पर पर्सन पर डे, आपका बहुत सारा अमाउंट हो जाता है, आपका 20-25 हजार तो वैसे ही टिप्स के लिए आ जाता है. तो हमारे पास ये पूरा आपका सेविंग्स होता है. वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल इन अ ग्रुप टूर. हम लोग बेच तो ग्रुप टूर हम लोग बेच रहे हैं, बट हम ग्रुप टूर में भी आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज दे रहे हैं
जो कि आप कोई भी FIT पैसेंजर्स को भी पिच कर सकते हो। बिकॉज FIT पैसेंजर्स का क्या होता है ना, कभी वो लोग सोचते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है या फिर बजट कंस्ट्रेंट होता है। तो आप हमारी इन्वेंट्री यूज करके उनको बेस्ट प्राइस बेनिफिट दे सकते हो। प्लस हमारे टूर में ना फ्री टाइम भी रहता है, तो अगर उनको खुद का कुछ एक्टिविटी करना हुआ तो वो खुद भी अपने पहले से प्लान करके जा सकते हैं। Best cancellation policies in the market. We have one of the best cancellation policy in the market. Yes, you have to pay us in advance, which is like, at least 25 days in advance you have to pay the full amount to Europa Mundo. But कोई भी reason से अगर booking cancel होता है, and if that's a genuine ground, so we will definitely, try to give you the maximum refund possible. राइट सो अगर वीजा रिफ्यूज हो रहा है या फिर पैसेंजर का कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, सो वी विल टेक दोज एज सीरियस reasons for canceling a trip. You have to give us the documents, and we will tell you the exact cancellation that will be charged. It may take some time because these are based on actuals, but we can actually give you the best refund possible. इंग्लिश स्पीकिंग टूर मैनेजर्स थ्रू आउट द टूर, हमारे सारे टूर्स में इंग्लिश स्पीकिंग टूर मैनेजर्स रहते हैं। हमारे टूर मैनेजर्स हिंदी स्पीकिंग नहीं होते हैं। बहुत इंडियंस लाइक दो तीन हमारे गाइड के टीम में इंडियंस है, लेकिन बिकॉज हम लोग ग्लोबल ग्रुप हैंडल करते हैं, तो टूर मैनेजर हिंदी में बात नहीं करेगा, वो इंग्लिश में ही बात करेगा। अगर आप 101 बात कर रहे हो शायद वो हिंदी में बात करे, लेकिन यूजुअली आपका इंग्लिश स्पीकिंग टूर मैनेजर्स ही होता है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर यूरोपियंस, दे आर बेस्ड आउट इन यूरोप, दे आर फ्रॉम स्पेन और समटाइम्स दे आर फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राजील। Okay, now the next point why you should choose us, because we have a versatile website, and using this website you can create itinerary, you can check the live inventory, and you can create a package in maybe few seconds. So this will actually help you to close the booking very fast, because यूरोप में जब हम काम करते हैं 2 दिन, कभी 1.5 दिन से 2 दिन तक लग सकता है, डिपेंडिंग की रेल का प्राइस हमको लेना है, साइट सीइंग लेना है, होटल्स लेना है। बट हमारे टूर में, हमारे वेबसाइट में अगर आप जाते हो, मैं आपको दिखाऊंगी आप कैसे 2-3 मिनट के अंदर आप एक प्रॉपर यूरोप का कोटेशन जनरेट कर सकते हो। Available on an app format, which is beneficial for travel agents and passengers. Quotes can also be created using an app. So अब यूरोपा मुंडो ऐप फॉर्मेट में भी आ गया है, बिकॉज अभी धीरे धीरे लोग कंप्यूटर भी कम यूज करने लगे हैं। सब कुछ व्हाट्सएप में, सब कुछ मोबाइल से ही हम लोग काम ज्यादातर कर लेते हैं व्हेन वी आर ऑन द मूव। तो हम अभी ऐप फॉर्मेट में आ गए हैं, एंड हम लोग अभी ऐप के थ्रू भी कोटेशन बना सकते हैं। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। हम लोग क्या क्या सेल करते हैं, हमारे पास क्या क्या डेस्टिनेशन है सेल करने के लिए। So the first sector that we do is UK, Scotland, Ireland. Okay, we have tours for UK, Scotland, Ireland. Sorry. We have tours for Western Europe. We do Italy, typical Italy, Swiss, France. We do London. As I said, we have combination of Schengen and UK. We do Eastern Europe. We do Prague, Vienna, Budapest, Germany, Austria. So we do all of that. We have tours for Scandinavia. We have tours for Baltic countries, मतलब लातविया, लिथुनिया, ये सब भी हम लोग करते हैं। पोलैंड करते हैं, रशिया है, हम लोग क्रोएशिया करते हैं, क्रोएशिया के साथ अदर बॉल्कन कंट्रीज करते हैं। जैसे हमारे पास बॉल्कन कंट्रीज में वी हैव टूर्स फॉर अल्बानिया, वी हैव टूर्स फॉर मैसेडोनिया, ऑल ऑफ दिस। वी हैव टूर्स फॉर जापान एंड साउथ कोरिया। वी डू टर्की, टर्की इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स, so we do Turkey, we do Egypt, we do Jordan. We also have tours for Israel, जो कि अभी थोड़ा disrupted है because of the war that is happening currently in Israel. But we, as a destination, we sell Israel. Limited departures we have for USA, Canada. We have tours for Mexico and Cuba also. We do solo country tours. हमारे पास सिर्फ इटली, सिर्फ जर्मनी, सिर्फ फ्रांस, सिर्फ स्पेन, हम लोग ये भी कवर करते हैं। So this is more or less the product portfolio. Now that's about a briefing about this company, about the USP and the products that we handle. Now I will take you to the website. I will show you how you can create packages from the website, and then we will come back to the presentation and I will show you more about the kind of hotels we use, the kind of buses we have.
I will show that to you. So let's go to the website now. अभी तक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज आप मुझे चैट में लिखिए और मैं आपको बता दूंगी. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज. ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन विद यू. একটু আস্তে কথা বলো না প্লিজ. Okay, so can you all see my website now? I hope you can see the home page of Europa Mundo. So you just need to go to Google and you need to type Europa Mundo. Okay, Europa Mundo. ये नाम याद रखना बस. Europa Mundo Vacations या फिर europamundo.com. ये आपको लिखना है और आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा. जैसे ही आप आते हो इस पेज में आपका ये होम पेज दिखेगा. राइट, होम पेज में आपको बहुत मैं आपको ये सिंपल कुछ चीजें दिखाती हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है. जैसे ही आप होम पेज पे आ गए, आपको फाइंड योर टूर में अपना कर्सर रखना है. ओके, नाउ इफ यू हैव सोल्ड यूरोपा मुंडो बिफोर, आपको टूर का नाम पता है या फिर आपके पास हमारा कैटलॉग है, आपको पेज नंबर पता है, तो आप ये टाइप करते हो इधर से टर्की एंड देन यू क्लिक ऑन सर्च टूर. अगर आपको देखना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है उस डेस्टिनेशन के लिए, उसके लिए आपको मल्टी फिल्टर में आना है. तो जस्ट गो टू मल्टी फिल्टर. जैसे आप मल्टी फिल्टर में आ गए, you can see all our tours, 539 tours. Okay, we have 539 tours to offer. तो अभी 539 tours में से एक टूर ढूंढ के निकालना तो काफी मुश्किल का टास्क है, राइट? दैट इज वाई हमारे पास ये मल्टी फिल्टर ऑप्शन है. आप मल्टी फिल्टर में जाओगे तो आपको इधर कंट्रीज का नाम लिखना है. सपोज मुझे एक टूर चाहिए इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड. तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले इटली लिखूंगी. जैसे मैंने इटली लिखा तो अभी इटली के साथ मेरे पास 101 टूर है. तो ये भी काफी सारे ऑप्शंस है, तो मुझे और फिल्टर करना पड़ेगा अपना सर्च. तो मैंने फ्रांस डाल दिया. जैसे ही मैं कंट्रीज डालती जा रही हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि अभी 100 से मेरे पास 60 टूर्स तक ये आ गया है. सो इटली, फ्रांस, स्विस. अभी फ्रॉम 60 आई हैव 56 टूर्स. सो दिस इज हाउ यू शुड फिल्टर योर सर्च. अच्छा, अभी मैं इधर जाके सिटीज भी लिख सकती हूँ. तो सिटीज में हम क्या लिखेंगे, हम लोग पेरिस लिखेंगे, हम लोग ज्यूरिक लिखेंगे, हम लोग रोम लिखेंगे, हम लोग लूसन लिखेंगे. तो नाउ कैन यू सी दैट वी हैव 36 टूर्स टू ऑफर. अच्छा, अभी क्या हो रहा है, आपके पास वही आइटिनरीज आ रही है जहां पर ये 3 कंट्रीज है. तो अगर आपके क्लाइंट ने स्पेसिफिक बोल दिया है कि देखो भाई मुझे बस ये 3 कंट्री ही कवर करना है, आप मुझे कुछ और मत देना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक छोटा सा नीचे बॉक्स है जहां पर लिखा है सिलेक्टेड कंट्रीज ओनली. तो आप इस पे क्लिक करोगे. तो जैसे ही आपने क्लिक किया, अभी देखिए आपके पास बस 2 टूर के ही ऑप्शन है और कुछ नहीं आ रहा है. तो बाकी जो हमारे टूर्स है उसमें और भी कंट्रीज है. इसीलिए जब आपने सिलेक्टेड कंट्रीज पे क्लिक किया तो बस वही 2 आइटिनरीज आपके स्क्रीन पे आ गई. बट आपको और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप बहुत ज्यादा फिल्टर लगाओगे तो शायद आपको कोई भी ऑप्शन ना मिले, बिकॉज हमारे आइटिनरीज तो फिक्स्ड है ना. तो हो सकता है कि आपके रिक्वायरमेंट से एग्जैक्ट वो मैच नहीं कर रहे हैं. वी हैव समथिंग क्लोजर. तो अभी क्लाइंट को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि चलो मेरा 3 कंट्री की जगह मेरा 4 कंट्री हो रहा है, विच इज ऑफ कोर्स वैल्यू फॉर मनी. मेरा 2 दिन ज्यादा लग रहा है, बट मैं एक ही बार में एक ही एयरफेयर दे के मैं पूरा वो बेल्ट ही घूम के आ रहा हूँ. तो ये आपको क्लाइंट को समझाना है कि सर आप इस प्राइस में मैं आपको और एक कंट्री ऐड करके दे रहा हूँ और आपका इसमें एयरफेयर भी कवर हो जा रहा है, आपको अलग से कुछ नहीं पे करना है, राइट? अच्छा, अगर आपको पता है कि मैं पेरिस से शुरू करूंगा या फिर मैं रोम से शुरू करूंगा, तो मेरा एयरफेयर मुझे अच्छा मिलने वाला है. अभी रोम का तो एयर इंडिया फ्लाइट भी शुरू होने वाली है. तो अगर आपको वैसे कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप स्टार्टिंग सिटी में अपना प्रेफर्ड सिटी डाल दीजिए. अभी देखिए आपके पास आ गया है 5 टूर्स. सो दिस इज हाउ यू शुड फिल्टर, ये 3 चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ. ऊपर आप देखोगे, ऊपर आपके पास ये प्राइस रेंज का एक बार है. प्राइस रेंज मतलब
आप क्लाइंट का बजट सेट कर सकते हो। क्लाइंट ने आपको बोल दिया है कि देखो भाई मेरे पास 100,000 यूरो के ऊपर मेरा बजट नहीं है, या फिर क्लाइंट ने आपको बोला कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, ये मैं स्पेंड कर सकता हूँ यूरोप ट्रिप के लिए। तो आपको पता है कि मैं एयर फेयर आपका करीबन 80,000 जाएगा, वीजा आपका और 10,000 गया, तो आपके पास 1,10,000 रुपए ऊपर नीच करके आपके पास है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन सेट द क्लाइंट्स बजट, राइट। या फिर आपको क्लाइंट ने बोला है कि मेरे पास 10 दिन के ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप इधर 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन जो भी करोगे, आपके पास वैसे ऑप्शन आ जाएंगे। अभी मेरे पास 3 ऑप्शन आ गया है, तो हम क्या करेंगे अभी, ये वाला मेरा क्लोजेस्ट जा रहा है 10 डेज, सारी कंट्रीज कवर हो रहा है, तो मैं इसको देखूंगी। उसको देखने के लिए क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। तो हमने व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया। जैसे ही हमने व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया, ये आइटिनरी ओपन हो गया। अभी हम नेक्स्ट पेज पे हैं, जहां पर आइटिनरी में क्या क्या है हम वो देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में आप देखोगे कुछ आइकन्स। इफ यू रिमेम्बर, दीज वर द आइकन्स दैट वी डिस्कस्ड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। गारंटीड डिपार्चर, ये आइकन आपको हमारे सारे टूर्स में दिखेंगे। सेक्टर यस, यानी आप सेक्टर्स ले सकते हो, पूरे टूर खरीदने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक अ स्टॉप इन बिटवीन, आप बीच में स्टॉप ले सकते हो। दिस रेड कलर्ड आइकन, ये आइकन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन नहीं किया है। इस आइकन के होने का मतलब ये है कि आपके इस टूर पर और 5% डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन वो डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करोगे। क्या क्या है वो क्राइटेरिया, अगर आपके क्लाइंट सीनियर सिटीजन है, अगर वो 65 साल के ऊपर है, तो आपको 5% ऑफ मिलेगा, राइट। अगर यह हनीमूनर है, अपने हनीमून पे जा रहे हैं, तो उनको 5% ऑफ मिलेगा। या फिर अगर वो यूरोपा मुंडो के रिपीट ट्रैवलर है और उन्होंने लास्ट 3 साल के अंदर यूरोपा मुंडो का कोई भी ट्रिप लिया है, तो उनको 5% ऑफ मिलेगा। ये 3 क्राइटेरिया में से क्लाइंट अगर कोई भी एक क्राइटेरिया में आता है, तो उनको 5% डिस्काउंट यूरोपा मुंडो ऑफर करता है। बट इसके लिए आपको नेसेसरी प्रूफ देना है, ऐसे नहीं कि आपने हाँ मेरा क्लाइंट सीनियर सिटीजन है। हमको कैसे पता चलेगा, पासपोर्ट से, आपको पासपोर्ट अटैच करना है। आपका क्लाइंट हनीमूनर है, हमको कैसे पता चलेगा, आपको मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना है। आपका क्लाइंट रिपीट ट्रैवलर है, हमको कैसे पता चलेगा, एक यूनिक कोड होता है जो कि आपको जनरेट करना होगा, हम बता देंगे कैसे करना होता है, तो वो कोड आपको हमें देना है। सो दीज आर दी सम क्राइटेरियाज दैट यू हैव टू फॉलो। अच्छा, नेक्स्ट आइकन है दिस येलो कलर्ड आइकन। व्हाट इज दिस अबाउट, नाउ दिस मींस दैट वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बसेस एंड गाइड्स। मतलब हमारे जो टूर मैनेजर्स होते हैं या फिर जो कोच है, वो बीच में चेंज हो सकता है। यूजुअली ग्रुप में क्या होता है, फर्स्ट दिन जो आपका टूर मैनेजर रहता है वही थ्रू आउट रहता है, और आपको एयरपोर्ट में टाटा बाय बाय करके वो अपना घर जाता है। यूरोपा मुंडो में ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत टूर मैनेजर्स है, और हमारे टूर मैनेजर्स बीच में चेंज हो सकते हैं। तो अगर आप 10 दिन के टूर में जाते हो, तो नेसेसरी नहीं है कि आपके पास एक ही टूर मैनेजर है, आपके पास 2 या 3 टूर मैनेजर तक हो सकते हैं। वैसा क्यों होता है, लेट मी गिव यू द रीजन व्हाई वी हैव इट लाइक दिस। बिकॉज हम लोग ना बैक एंड पे कुछ सेक्टर्स सेल कर रहे हैं, राइट। दो वी आर शोइंग यू दैट वी हैव 500 टूर्स टू ऑफर, but the main science behind this is that we have some mother circuits happening। और मदर सर्किट्स जहां जहां पर ओवरलैप करता है या फिर जहां जहां पर चेंज होता है, उधर हम लोग अपना टूर मैनेजर्स चेंज करते हैं। बट ये जो टूर मैनेजर चेंज हो रहा है या जो कोच चेंज हो रहा है, इस पे क्लाइंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही इज गेटिंग व्हाट ही हैज पेड फॉर। all his sightseeings that we have committed, that will be given to him। So we are keeping our words. It's just because of our way of operations, we have to change the coach, we have to change the tour manager, and your passenger will not be able to feel that he's actually transiting from one circuit to the other। So that's how we operate. That is the logic behind Europa Mundo's existence। ओके, सो ये हमने बात की कि हमारे पास क्या क्या टूल दिखते हैं वेबसाइट पे। नाउ हियर यू कैन सी द फोटो गैलरी, कि अगर आपको टूर के कुछ फोटोज देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, या फिर आपको मील्स में क्या होता है वो देखना है, तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन इधर से मिल जाएगा। हमारे पास एक लंच इंक्लूडेड है, तो वो लंच का क्या मेन्यू है वो भी हमने पहले से लिख के दिया है।
ऑप्शनल आउटिंग्स, ऑप्शनल आउटिंग्स मतलब हमारे टूर में तो कुछ कुछ एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती है, उसके अलावा अगर कुछ ऑप्शनल एक्टिविटीज हैं जो कि क्लाइंट ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा पे करके करना चाहता है, वो कौन सी टूर्स है वो आपको इधर से मिलेगा। ये इसमें आपको ये भी मिलेगा कि कितना घंटे का ये टूर होगा, उसका अमाउंट क्या है, एंड ये टूर ऑपरेट करने के लिए हमको कितने पैसेंजर्स चाहिए। सो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ऑप्शनल टूर लिस्ट। आप इसको उठा के क्लाइंट को दे दो कि सर ये आपका इंक्लूडेड नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप इधर से भी पे कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ऑन ग्राउंड जाके भी पे कर सकते हो। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो प्राइस है ये आपके लिए कमिशनेबल नहीं है, ये यूरोपा मुंडो का नेट पेएबल है, तो आपको इस पे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। हेंस इट इज रेकमेंडेड द क्लाइंट्स आर बुकिंग इट डायरेक्टली विद द टूर मैनेजर ऑन ग्राउंड, या फिर हम बुकिंग करने के बाद एक वेबसाइट का लिंक देते हैं या फिर ऐप आपके पास है तो वो ऐप से आप ऑप्शनल टूर क्लाइंट खुद खरीद सकता है यूजिंग हिज ओन क्रेडिट कार्ड। सो दिस इज अबाउट द ऑप्शनल टूर्स। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिटेल्ड आइटिनरी। डिटेल्ड आइटिनरी में आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट टाइम वाइज आइटिनरी आपको मिलेगा, एग्जैक्ट आपको आप कितना किलोमीटर एक दिन में कवर करते हो, या फिर आप एक दिन में आप कितने बजे शुरू करते हो कितने बजे शाम को खत्म करते हो, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इवन बिफोर यू बुक यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द रीजन इज दैट कि आपका ये जो फर्स्ट दिन रूम का अराइवल है, आप देखोगे 7 बजे हम लोग एक इवनिंग का ट्रांसफर देते हैं। बेसिकली दिस इज नॉट एन एक्टिविटी, दिस इज नॉट अ साइट सीइंग, दिस इज ओनली अ ट्रांसफर विच विल अलाउ द क्लाइंट टू हैव हिज फूड, टू हैव हिज डिनर, बिकॉज हमारे टूर्स जो है वो सारे बेड एंड ब्रेकफास्ट के बेसिस पे होते हैं, मील्स इंक्लूडेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द इवनिंग्स we take our passengers to city center areas, we give them free time and we bring them back to the hotel। तो ये रिटर्न ट्रांसफर रहता है। तो ये 7 बजे करीबन है। तो अगर आपका क्लाइंट सुबह 11 बजे अराइव कर रहा है तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि सर आपका इवनिंग ट्रांसफर आपको मिलेगा होटल रिसेप्शन से, आपका गाइड आके आपको होटल लॉबी में मिलेगा। अगर आपका क्लाइंट शाम के 7 बजे ही अराइव कर रहा है तो आपको पहले से आप बता दोगे कि सर आपको ये ट्रांसफर नहीं मिलने वाला है, आपको स्ट्रेट अवे नेक्स्ट डे आपको गाइड को मिलना है फॉर रोम सिटी टूर। सो लाइक दिस यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। आप मोटा मोटा कितना टाइम कितने बजे आपका डिपार्चर होता है होटल से, आप कितने बजे पहुंचते हो, ये सारा इंफॉर्मेशन बिफोर इवन यू बुक यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। You can download the Word file, and if you don't want to show your clients that this is an Europa Mundo tour, you can you can just write, you can like add the airfare, you can add the visa, like the documentation, or maybe the price here, and you can make it a whole package, wholesome package, and you can give it to the client. You can also download the PDF file, but you will not be able to do any amendments. उसके बाद ये है आपका ट्रैवल टिप्स। ट्रैवल टिप्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ट्रैवल टिप्स में हमने क्या किया है कि हर एक सिटीज की जो खासियत है वो हमने ट्रैवल टिप्स में डाल दिया है। जैसे अगर आप मैड्रिड जा रहे हो तो मैड्रिड में आपका कौन सा फेमस टापस रेस्टोरेंट है, या फिर मैड्रिड में आपका कौन सा फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है, या फिर आपका कौन सा फेमस एक फोटो स्टॉप है जहां पर क्लाइंट को जाना ही चाहिए। बहुत सारे अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अभी आ गए, हम लोग सब कोई ब्लॉगिंग करते हैं, तो अगर किसी को उस जगह में जाके फोटो खींचना हुआ अपना, तो वो उधर जाके ये सारी इंफॉर्मेशन इनसाइट्स अबाउट दैट सिटी ही विल बी एबल टू गेट फ्रॉम दिस ट्रैवल टिप सेक्शन। Passenger feedback is self-explanatory. I don't need to tell you what passenger feedback is all about. And then scroll down here, you have the day-wise itinerary, the day-wise planning. इधर आपका लिस्ट ऑफ होटल्स मिलेगा कि हम कैसे होटल्स यूज करते हैं हमारे टूर्स में, ये सारे आपको इधर से मिल जाएगा। एंड देन यू कैन सी द इंक्लूजन, हमारे टूर में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। सो इसमें आप देखिए हमने लिखा है ट्रैवल बाय बस विद इंग्लिश स्पीकिंग गाइड। तो हमारे टूर में
हमेशा एक टूर मैनेजर रहता है 24/7. यू हैव अ टूर मैनेजर विद यू. ही मे नॉट बी ट्रैवलिंग और यू मे नॉट बी holding your hands 24/7. That's not possible. But you have an assistance of an English speaking tour manager during your trip. You have a basic travel insurance which is included, but remember two things here. This is a group insurance. You do not get any documents from here, and to get a Schengen visa आपको वैसे भी अलग से मिनिमम 30,000 यूरो की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, तो वो आपको करना है. ये हम अपने एंड से एक आपको दे रहे हैं, दैट इज फॉर द होल ग्रुप. But it is always advisable that you should have your own insurance policy from your country of origin, right? Because our insurance has got very limited things covered. और जब हम इंडिया से लेके चलते हैं तो उसका कवरेज भी बेटर होता है, उसका क्लेम पाना भी इजी होता है. अच्छा, ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड ऑलवेज. दीज आर ऑल होटल ब्रेकफास्ट. और यूरोप में ब्रेकफास्ट जो होता है, आप बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी, बट आई एम टेलिंग यू अगेन. यूरोपियन ब्रेकफास्ट आर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट. दे आर मोस्टली कोल्ड कट्स. ठंडा ब्रेकफास्ट होता है, गर्म ब्रेकफास्ट नहीं होता है. कोल्ड कट्स में आपको सलामी मिलता है, सॉसेजेस मिलता है, चीज मिलता है, बट ये सब ठंडा होता है, राइट? You get bread, you get cornflakes, you get oats, all of these things you get. You get fruits, you get juices sometimes. You may or may not get eggs in the hotel. So these are some of the breakfast options, menu options. उसके बाद क्या इंक्लूडेड रहता है? अराइवल ट्रांसफर. यानी आपका क्लाइंट कभी भी अराइव करे, he will get a transfer from Europa Mundo Vacations. Somebody from Europa Mundo will be waiting for your clients at the airport to pick them up and bring them to the hotel. So there is no time restriction. Clients can arrive 4 o'clock in the morning, 12 o'clock in the midnight, 2 o'clock in the afternoon. He will always get a transfer. The only thing we need from you is the correct flight details. That is extremely important. We cannot arrange the transfers just on basis of your request. We need to have the correct details. City tours are included in Rome, Florence, Venice, Paris. We have excursion to Versailles. However, the entrance is not included. We take you to the gardens. Then we have boat ride included. कि जहां पर भी आपका कोई भी बोट राइड हम दे रहे हैं, उसका अगर टिकट रहेगा तो वो भी हम मेंशन कर देंगे. जैसे पेरिस में सीएन रिवर क्रूज है, या फिर जब हम वेनिस में जाते हैं तो वेनिस में जब हम आइलैंड तक जाते हैं तो आपको एक बोट से ही जाना पड़ता है, तो वो बोट इंक्लूडेड है. इवनिंग ट्रांसफर्स इंक्लूडेड है टू विया कावूर एंड ट्रेस्टेवेरे इन रोम. We have transfers to Piazza del Michelangelo, Montmartre, and Versailles Palace. Now, what is ticket admission? We have Imperial Forums of Rome. We have St. Mark's Basilica and Murano Glass Factory in Venice, and second level Eiffel Tower in Paris. So these are the entry tickets that are a part of your package. तो कहाँ पर हम एंट्री करेंगे और कहाँ पर टिकट्स इंक्लूडेड है, वो हमने ऑलरेडी इस पे लिख दिया है. फ्यूनिकुलर मतलब क्या क्या केबल का राइड हमारे पास है वो भी हमने लिख दिया है. तो हम ग्रिंडल वॉल लेके जाते हैं एंड मोमार्थ लेके जाते हैं पेरिस में. अच्छा, इसके अलावा कोई भी अगर हम मील्स देंगे तो वो हम मेंशन करते हैं. इसके अलावा अगर हमारे पास हमारे टूर में कोई ट्रेन जर्नी है या फिर कोई फ्लाइट जर्नी है तो वो भी हम हमेशा इसमें मेंशन करते हैं. And we do not whenever an internal ticket is included, it's always it comes with one piece of package. It is always with one piece of package. So this is about the inclusions that we have. अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, प्राइस कैसे देखना है हम वो देखते हैं. प्राइस के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू कोट योर टूर. डू नॉट कोट फ्रॉम हियर बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग प्राइस. ओके, अगर आपको करेक्ट प्राइसिंग देखनी है उसके लिए आपको कोट योर टूर पे आना है. कोट योर टूर पे आप जैसे ही आओगे आपके पास डिपार्चर डेट्स आ जाती है. आज हम 20 तारीख पे हैं, इसीलिए ऑलरेडी कल का डिपार्चर सोल्ड आउट बता रहा है. इट इज नॉट पॉसिबल टू बुक दिस टूर. बट अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको फरवरी में भी 4 डिपार्चर डेट्स मिलेंगी, और अगर आप नेक्स्ट करोगे तो आपको मार्च में भी 4 डिपार्चर डेट्स मिलेंगी. 17 मार्च ऑलरेडी सोल्ड आउट है, बाकी आपका बाकी डिपार्चर डेट्स आपके अवेलेबल है.
अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए डिपार्चर, नेक्स्ट सीजन के लिए, नॉट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सीजन के लिए अगर आपको डिपार्चर देखना है, उसके लिए आपको अप्रैल में क्लिक करना है, ट्रिप आफ्टर April 1st। अगर आप उस पर क्लिक करोगे, अभी आप देखिए आपके स्क्रीन पे सारी डिपार्चर डेट्स पोस्ट अप्रैल आ गई है। सो 7th, day 7 means 7th of April, which is a Sunday. So we have departure from Rome every Sunday. It's the high season and this is the online inventory। मतलब इधर हमारे पास 20 सीट्स आ रही है अभी। मतलब आपको मेरे से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ना कि अकबर से चेक करना है। आपको बस जाके क्लाइंट को ये कोट करना है, क्लाइंट राजी हो गया, अभी आप ब्लॉकिंग के लिए भेज दो। तो दिस इज द लाइव इन्वेंट्री। अगर इधर सीट है मतलब टूर में जगह है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बाकी मंथ्स के भी सारे डिपार्चर डेट्स दिखाएंगी टिल नेक्स्ट ईयर March 31st। तो हमने पूरा सीजन का डिपार्चर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। दीज आर ऑल गारंटीड डिपार्चर्स। आप कोई भी डिपार्चर्स चूज कर सकते हो विदाउट हैविंग अ थॉट इन माइंड वेदर द टूर विल ऑपरेट और नॉट। सो फर्स्ट चीज जो आपको करना है, एक कोटेशन बनाने के लिए आपको डिपार्चर डेट सिलेक्ट करना है। सो क्लिक ऑन डिपार्चर डेट एंड नाउ दिस इज सिलेक्टेड। आपने 2 जून का डिपार्चर डेट ले लिया है। अभी आप नीचे आ जाइए। नीचे आपके पास रूमिंग ऑप्शन है। क्या क्या है रूमिंग ऑप्शन में? सिंगल। सिंगल मतलब अगर कोई सोलो पैसेंजर ट्रैवल करता है और उसको सिंगल रूम में स्टे करना है, तो आपको इसमें आपको सिंगल रूम लेना है। अगर आपके पास वही सिंगल क्लाइंट आके बोलता है कि नहीं, मुझे 500 यूरो 600 यूरो का सप्लीमेंट नहीं देना है, आप मुझे भले ही किसी के साथ रूम शेयर करवा दो लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, तो फिर यू कैन गो फॉर दिस शेयर्ड ऑप्शन। शेयर्ड ऑप्शन मतलब आपने शेयर्ड पे बुक किया, अभी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने बुक करके छोड़ दिया। यूरोपा मुंडो विल लुक फॉर अ पार्टनर फॉर योर क्लाइंट। इफ यू डोंट गेट अ पार्टनर, your client can stay in a single room without paying a single penny extra. Okay, he can stay in a single room by paying this amount. But whenever you sell this shared tour option, tell the client that he will have a room partner of the same gender, but he can be from any nationality. He can be from US, he can be from Australia, he can be from Africa, anywhere. But he will be of your same gender. अच्छा, नेक्स्ट है डबल। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो आपको डबल रूम लेना है, अगर 3 लोग जा रहे हैं तो आपको ट्रिपल रूम लेना है। तो सपोज एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे, सॉरी 2 पेरेंट्स है, मम्मी पापा और एक बच्चा जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रिपल रूम उठाना है। या फिर हस्बैंड वाइफ जा रहा है तो उसके लिए आपको डबल रूम लेना है। तो हमने एक ट्रिपल रूम ले लिया। ट्रिपल रूम लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमको एज डालना होता है। तो आप अडल्ट्स के लिए यू डोंट नीड टू नो द एग्जैक्ट एज, आप कोई भी एक रैंडम एज बिठा सकते हो, बस बच्चे का एग्जैक्ट एज ले लेना। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको पूछ लेना कि उनका करेक्ट एज क्या है, बिकॉज 65 के ऊपर हम लोग 5% डिस्काउंट देते हैं। तो आपने बच्चे का एज बिठा दिया। Okay, now you have the passenger club option. Do you remember what passenger club was? That was that 5% off. So do not even click on this by mistake, because अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका 5% डिस्काउंट उठा तो लेगा, लेकिन जब आप बुकिंग प्रोसेस करोगे आपको नहीं मिलेगा डिस्काउंट। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। अच्छा, अभी आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे कंप्लीट टूर लीजिए, नहीं तो फ्लेक्सिबल टूर लीजिए। मैं पहले कंप्लीट टूर का बताती हूँ कि वो क्या है। कंप्लीट टूर यानी आप पूरा टूर ले रहे हैं, जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं उधर से आप शुरू कर रहे हैं और एकदम एंड में खत्म कर रहे हैं पेरिस में। तो ये तो आपका सिंपल है, कोई झमेला नहीं, बस स्क्रॉल डाउन कीजिए। अराइवल ट्रांसफर आपका इंक्लूडेड है। आप बस अपना एयरपोर्ट लिखिए कि आप कैंपानो में अराइव करोगे या फुमिचिनो में अराइव करोगे, अपना एयरपोर्ट डाल दीजिए। और डिपार्चर ट्रांसफर हमेशा एक्स्ट्रा होता है, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपको डिपार्चर ट्रांसफर यूरोपा मुंडो के साथ अरेंज करना है तो आप हमारा प्राइस ले सकते हैं, या फिर आप क्लाइंट को बोल सकते कि सर आप होटल से टैक्सी बुक कर लो, आपको इससे कम में मिल सकता है।
या फिर आपने अलग से कोई गाड़ी बुक करके उन्हें दे दी। तो these are the options you have. I'm not selecting the departure transfer as of now. If you want to add hotel nights at the start or at the end, you can do that with us. Up to 4 nights you can book. We will give you the rooms in the same hotel if the rooms are available for the extension nights there in that hotel. अभी नीचे आ गए, आपने कैलकुलेट कोट पे क्लिक किया और अभी आपके पास 3 लोगों का कोटेशन बन के आ गया। 3367 is the price that you can quote to your passenger. This is a gross price and this is commissionable to you. By what percent that Akbar will tell you, but this is commissionable. You don't need to add any markup on top of this. And as you have noticed, this website does not need any login, which means even a client can come, he can generate a quote. But remember, Europa Mundo is a B2B company and we do not entertain any client's interaction. So वो quotation तो बना सकता है, लेकिन he cannot contact or establish contact with us. He needs to reach out to his travel agent for this reservation. And we are very, we are very serious about this. Uh, we do not entertain any such client interaction. Like none of us, we do not speak to the clients. So you can be rest assured that जो भी business आप हमें दे रहे हो, आपका डेटा हमारे पास प्रोटेक्टेड है। ओके, नाउ हमने देखा कंप्लीट टूर कैसे करना है, लेकिन फ्लेक्सी टूर भी आप कर सकते हो। इधर से आपको दिखाती हूँ मैं कैसे। फ्लेक्सिबल टूर मतलब आप पूरा टूर नहीं ले रहे हो, आप वो फ्लेक्सी वाला ऑप्शन ले रहे हो जो मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था। तो सपोज क्लाइंट बोल रहा है कि देखो मेरा ना पेरिस घूमा हुआ है, मुझे पेरिस नहीं जाना, आप मुझे रोम से टूर दे दो और मुझे ज्यूरिक में खत्म करना है, उसके बाद में स्विट्जरलैंड खुद से करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको रोम में क्लिक करना है, आपको रोम में क्लिक करना है। यू हैव टू सिलेक्ट रोम एज योर स्टार्टिंग सिटी। हमने रोम में क्लिक किया और उसके बाद आपको सिस्टम दोबारा से पूछ रहा है सिलेक्ट वेयर डू वांट टू एंड योर टूर। तो हमने ज्यूरिक में टूर को एंड कर दिया। अभी जो नीचे का पेरिस का सेक्टर था, आप देखिए वो पूरा हट गया है, वो अभी नहीं आ रहा है। तो हमने बस ये टूर रोम से ज्यूरिक तक लिया है, राइट। तो ये मेरा आइटिनरी है। और अगर मुझे बीच में कहीं पे भी स्टॉप चाहिए, डू वांट टू स्टॉप इन बिटवीन, आई हैव टू सिलेक्ट यस आई वांट टू स्टॉप एंड आई वांट टू स्टॉप इन वेनिस से फॉर एग्जांपल। So I can take a stop in Venice for 7 days, for 14 days, for 21 days, for 28 days, all multiples of 7. Why? Because our departures are all weekly. तो अगर आप वेनिस में स्टे ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 दिन का लेना होगा। अगर आप ऐसा कोई टूर चूज करते हैं जहां पर हफ्ते में 2 डिपार्चर डेट है, दैट इज द ओनली ऑप्शन वेर यू कैन गेट स्टॉप फॉर 3 days or 4 days। बट हमारे मोस्ट ऑफ द डिपार्चर्स दे आर वीकली डिपार्चर्स, सो वो ऑप्शन आपको कम ही मिलता है। सो नाउ ये आपने सेक्टर हटा दिया है। अभी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप वो सेम फॉलो करेंगे। अगर आपको शुरू में हमसे एक्स्ट्रा नाइट चाहिए तो हमने ले लिया। आपको अराइवल ट्रांसफर जो है मैंने तो बोला था इंक्लूडेड है, बट द मिनट यू गो फॉर एनी कस्टमाइजेशन यू हैव टू पे फॉर इट एडिशनली। ओके, सो हमने ये वाला उठा लिया प्राइस। डिपार्चर ट्रांसफर भी हमने ज्यूरिक में उठा लिया और नीचे आ गए और हमने कैलकुलेट कोड पे क्लिक किया। तो जैसे ही हमने कैलकुलेट कोड पे क्लिक किया, अभी आप देखिए आपका पूरा कोटेशन बन के रेडी हो गया फॉर 3 पैसेंजर्स। इट इज इंक्लूसिव ऑफ 1 एक्स्ट्रा नाइट, it is also inclusive of the departure transfer. Though we have been charged for the arrival transfer here, but at the time of creating the quote, the arrival transfer is saying included, but the price is coming as 0. मतलब हम लोग आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं। So every time you do any customization, you have to check whether the arrival transfer is included or not. तो ऐसे आपको कोटेशन बनाना है और बस आपने बना लिया कोटेशन, इस छोटे से बॉक्स पे क्लिक कीजिए और अपना ईमेल आईडी डालिए। तो मैंने अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल दिया। जैसे ही मैंने डाला मेरे पास नीचे एक ऑप्शन है कि हम इंडिविजुअल है या फिर ट्रैवल एजेंट है। मैंने ट्रैवल एजेंट पे क्लिक किया और मैंने रिक्वेस्ट है कोट कर दिया। आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि इंडिविजुअल क्यों दिया है हमने। इंडिविजुअल इसीलिए दिया है ताकि अगर कोई क्लाइंट कोटेशन बना रहा है हमारे वेबसाइट पे तो हमको वो पता चलता है, बिकॉज आपने इंडिविजुअल पे क्लिक किया है। तो जैसे ही हमारे पास वो
नोटिफिकेशन आता है, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ये कॉन्टैक्ट किसी को भेजता है जो कि हमारे ऑपरेटर है, उनको भेज देता है ताकि वो क्वेरी फॉलो अप कर सके. सो दिस इज how you can generate a code from Europa Mundo website, and you will get an email from Europa Mundo with all the information like this on your system. अगर आपको देखना है कि कितना आपका डिस्काउंट मिला है, ये सारा आपको डिटेल्ड पे दिख जाएगा कि चाइल्ड डिस्काउंट मिला है आपको इतना, ट्रिपल डिस्काउंट मिला है आपको इतना, एवरीथिंग यू विल गेट टू सी. एंड नाउ स्क्रॉल डाउन एंड you can now see what we have included and what are the hotels. So any questions so far? कोई भी queries है आपके मन में तो प्लीज मेरे से पूछिए. प्रेजेंटेशन में आपको अगर कुछ भी ध्यान आ रहा है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं. If you don't have any question, let me just quickly go back and share my screen before I end this presentation. I would like to cover few things quickly. One sec, please. Hello, Valerie. Yeah, I got a call from somebody in Akbar, so I just answered that. Anyways, okay, so we have a few questions coming in. I will tell you, I will answer all your queries. But I just saw a question here. Can we choose hotels? No, you cannot, because this is a group package. Everything is prefixed. So you have to go by what we have given you. If you have any other, hotel preference, you unfortunately you cannot have it. The hotels that we use, they are all combination of 3 to 4 star. तो मैं होटल में अभी आ जाती हूँ. मैंने दोबारा से अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर किया है, तो आप देखिए इसमें हम लोग होटल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे, which is very important. Please pay attention here. Quality chain of hotels we have combination of 3 to 4 star. So our hotels are not 5 star hotels. As I said, this is this product is for the mass market. If you have a client who is into luxury, who is only, he only stays in a Marriott or only Hilton properties, we are not the right product for them, because our hotels are a combination of 3 to 4 star. It's mostly 4 star, but there are some hotels which are 3 star. Like in London, we use Ibis, we use Premier Inn, which are 3 star properties. We have basic amenities in the hotels like towels, soaps, shampoos. These are basic amenities. Kettles are not. So India में अगर आप कोई भी 3 star वाले ही होटल में क्यों ना चले जाओ, kettle is something that you will always get, but that is not the case with Europa Mundo. And then our hotels are located within city limits. This means that you can easily explore the city on your own. हमारे hotels जो है वो बहुत दूर नहीं होते हैं होटल से, वो सेंटर से. तो अगर आपके पास अगर आपके क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं मुझे तो सिटी सेंटर में ही होटल चाहिए, तो unfortunately our hotels are not located within the city limits. Okay, so you can actually do you can come book to the city center if you feel like, because the hotels that we use, that has some mode of transportation, public transportation in and around the city. City taxes are included. City taxes are not extra. City taxes are included. And you can, as I said during the presentation, you can add additional nights up to 4 nights. These are the Europa Mundo coaches. Okay, these are the coaches that we have, that we use in Europa Mundo. All Europa Mundo branded coaches. These are very colorful, pretty coaches. If you have been to Europe, I'm sure you must have seen one of our coaches, because we have so many roaming all the time. And ये अंदर की seating आपको दिखेगी. These are all comfortable luxury coaches. You sometimes the buses, they have vending machines. You have plug sockets on most of the vehicles. We are working towards putting router in all of our buses, and by 2024 we should have Wi-Fi in each of the coaches that we use. Right now it's not there, it's not on all of our tours, but yes, some of them has it.
So now I will tell you how to book an Europa Mundo tour. So first thing, you went to the website, you created a quote. Now you have sent that quote to the client. The client has agreed and now he wants to book with you. So for that, for you to book is very simple. You have to get in touch with our distributor, which is Akbar Travels, Akbar Holidays for you. We have people from Akbar here and you have to send the request to them. You will get a time limit for 72 hours. After you have got the time limit, you have to pay the advance deposit and your booking will be confirmed. Otherwise, if you don't pay the deposit, the booking will get auto released from the system. So this is how you should book and tour. Okay, now how you can sell these tours to the client who are looking for Indian dinners, because हमारे मार्केट में ना अभी भी क्लाइंट बोलते कि अरे आपका तो डिनर्स नहीं है, फिर हम ग्रुप में क्यों जाए, हम तो एफआईटी ही कर सकते थे। तो आप उन क्वेरीज को कैसे हैंडल करोगे, या फिर आपका अगर टूर कोई कंपेयर कर रहा है कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, कोई भी और ऑपरेटर के साथ जिनका इंडियन डिनर्स इंक्लूडेड है, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि सर हम लोग आपको इंडियन डिनर्स नहीं दे रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट you know our tour managers they are well equipped with the information of Indian restaurant, तो वो आपको बता देंगे इवनिंग ट्रांसफर्स के टाइम कि ये जगह पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, तो आप उधर जाके इंडियन खाना आराम से खा सकते हैं। बट वी आर ऑल्सो गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ एक्सपीरियंसिंग द लोकल क्विजीन। अगर कोई इटली जा रहा है, वो पिज्जा पास्ता ही मतलब खाना चाहिए ना मैक्सिमम टाइम, मतलब आप इटली में जाके क्यों इंडियन खाना खाओगे? सो यू हैव टू कन्विंस योर क्लाइंट दैट मील्स इज नॉट देयर, व्हिच इज अ गुड पार्ट, because we are not restricting you to only one kind of food throughout the next 14 days that you are in Europe. We are giving you an option to choose what you want to eat. अगर आपको यूके में जाके फिश एंड चिप्स खाना है, या फिर अगर आपको इटली में जाके पास्ता खाना है, you have those options available. और अगर आपको नहीं खाना है, आपको इंडियन खाना है, तो हमारे टूर मैनेजर्स आपको असिस्ट कर देंगे कि सर दीज आर द इंडियन रेस्टोरेंट, हियर यू कैन गो एंड हैव इंडियन फूड। बट यस, आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव टू फिनिश योर फूड एंड कम बैक एंड मीट द टूर मैनेजर अगेन for your return transfer to the hotel. Now, the next question that we very frequently get is about the mountain excursion. कि आप हमें माउंट टिटलिस दे दीजिए या फिर माउंट जुंगफ्रो दे दीजिए, बट ये हम अपने टूर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। The reason being, we are not handling people from India. We have people coming from different countries. और Mount Titlis या फिर Mount Jungfrau, these are typically done by Indian passengers. I'm sorry to say, but people from USA may not like Titlis or may not like Jungfrau because it's full of Indians there. If you go to Titlis in May, you will see only Indian faces. It will feel like you are in India somewhere. It will not look like Switzerland at all. So that is why we do not promote mountain excursion. We have Glacier 3000 included in our tours. In fact, we have the option to we have the option to include optional tours. One second, just be online. Yeah, Faizan. Okay. Okay. Yeah. Yeah, sure. Done. Done. Okay, done. Done. I'm almost there to finish, so I will tell you. Okay. Yeah. Yeah. Okay, so that's, let me just quickly go back to the previous slide because my colleague from Akbar, Valerie, is waiting for us to finish this presentation and then she would like to share something. So let us just quickly, go through it. And so Mount Titlis is something that you can sell now with Europa Mundo, but as an optional. But if you're looking for an itinerary where you want Glacier 3000 to be included, we have it included in one of our or two of our itineraries. At the time of booking, please share client's phone number and email ID with Akbar Travels, with Akbar Holidays, because in case of emergency, our office may need to connect with your clients. Remember, we do not use these details for any other things. It's just that this will make your life simple. So do share the email ID and the phone number of the clients at the time of booking. After you book, we give you a My Trip link, which you are supposed to give to the client, because from this link, a client can have an access to all the information that
he needs to know before he travels on an Europa Mundo trip. Similarly, we now have an app which is available on Play Store and also on Apple Store, and you can download the app and you can you can see all the vouchers that we have. So we do not give any physical handovers nowadays, so it's all digital. If you want to give printouts, of course you can give, but it's all available on the app. And then we also provide free time for own activities, and that is why Europa Mundo can also be given to a customer who is looking for an FIT package. So after you finish the city tour, you have free time. So if a client is traveling, he can actually plan his days, plan his activities accordingly, and he can get the flavor of the local culture during that free time. So that's it. There are a few other things that is not really important because this is our first meeting anyway. But just for information, that Europa Mundo also do private tours. So if you have any inquiry for private tours, do get in touch with Akbar. They will tell you how you can, how you can sell private tours with Europa Mundo, where we can accommodate minimum 2 to maximum 7 passengers. This is the discounting slab, which you don't need to remember because it's all there on the system. And that's where I finish my presentation. And now I will, stop sharing my screen. And I have few questions here. Valerie, are you there? You can unmute yourself. I have given you the right to unmute. Let me just see. Valerie asked to unmute. Valerie, are you there? Yes. Hi, Navonita. Hi. Am I audible? Yes, you are. Valerie, before you start sharing your screen, we have few questions in the chat box. Can we please take that? Okay, I'll address those. First question comes from Syed Kamar. Ma'am, please repeat point 5 in Quote Your Tour. Okay, so we have already closed that website. But point 5 was very simple. That is the place where you needed to add your additional transfers, additional hotel night. Then you just calculate your quote. So that was all about point 5. Do we need to add GST on the final price? About GST, okay. So GST is not something that you need to pay to Europa Mundo, but because you are selling the tours in India, you have to collect GST from the client. And I believe Validity, you also take GST, right? No, I'll just give a brief on this one. A GST is something that is charged, but we absorb it in our costing. So basically, what quotation is there from Europa Mundo less the TAC that will be parted to you, you just add the TCS component. GST is something that Akbar would absorb it for you. So no, you will not be adding GST. Yes, Jana. Just to clarify on the GST point, irrespective of whether Akbar collects it or not, or we absorb it, from travel agency perspective, it is important that the GST is collected. Yep, because that is a statutory requirement. Okay, so I think we have the clarity about GST. The next question is from Umesh, I think. Visa process and contact person for visa. Okay, Valerie, would you like to address it? Yeah, Umesh, we can help you out with the visa processing. We have a dedicated visa team out there. And if you are an online agent, we also have a section of visa. And I suppose maybe Madan or your salesperson could guide you better of how to go with the visa processing, and the online team who can help you out with the applications and etc. If someone could from the online team could write in the visa contacts here, would be great. What about the new TCS tax?
That is the next Yes, question here. TCS, which is applicable from the 1st of October, which is changed to 20%. But there are certain conditions to it, like we all know. If a client has completed in this financial year any kind of transaction which is above 7 lakhs, 20% will be applicable. Otherwise, it's 5%. So we are going ahead with the same. It's either 5% or 20%. If that's something we can talk one-on-one, Sarji, we can connect. Faizan, if it's handy with you, could you send out the contact details here? Whose contact detail? Holidays team. I'll ask Or for the them to sales broadcast person. it through the company, through the sales team. Okay, okay. Visa All what I free. can do is right now just share the one email ID, that's fit@akbartravelsonline.com for all inquiries, and call center number. Okay, someone has asked from Take Travels, can we Yeah, see hotels that you have chosen for packages like hotel names? Of course, you can see that. I showed you that page from where the itinerary can be seen. Just beside that, there is an option called planned hotels. So you can see the list of hotels that we have, but the confirmed list of hotels after you have booked, that will come closer to the departure date. It can be as close as 48 hours. The reason being, we accept bookings till the last minute. So when when we have the full rooming details for the hotels, we send them the rooming list, and then the hotel starts getting updated one by one. But it doesn't mean that before that you don't have a reservation. Of course you have, but we have it as a block from Europa Mundo, not on the passenger's name. But when we send the rooming list, that is when the list gets updated on your app or on the MyTripLink. yeah. So there are a couple of more questions. One is on the cruise. So Akbar Online has cruise portal where Cordelia, MSC, and Holland America can be booked. Apart from that, all other cruises you can certainly raise an inquiry to us offline, and we can offer you cruise quotations. From Europa Mundo point of view, whatever is included in terms of cruises, all they are coming up with boat cruises in future. Those are the things that can be booked, but not standalone. Standalone cruises, be it Resort World, or Royal Caribbean, MSC, Cordelia, those are the things that can be booked through Akbar. Visa fees is included in trip cost. In Europa Mundo, it's a land only cost. Visa fees is not included in it. Visa fees has to be added. Those are additional stuff. Visa fees, GST, TCS, flights, those are the things that needs to be handled at our end. Okay, I think that's about it in terms of questions. We will quickly go through, like, we have Valerie, of course, and we just want to take you through European fixed departures that Akbar has launched, which is all inclusive fixed departures. Valerie, you managed to get your Zoom up on your system, or it still is an issue? Navanita, can you unmute Valerie? Hi, Faizan. I think she was not on mute. She spoke few minutes back, right? Yeah, One I think second. she. But I have given right to everyone to unmute themselves. I don't know why it's not working. Ask It's to not working. unmute. Okay. Yes, Valerie, you Now are I'm not. okay. I'm unmuted now. Yeah, Faizan, I was not able to get through the system. That's why I've joined in from the phone. Nabanita, I've sent you a presentation on the WhatsApp. If you could Yes. open it. Yeah, sure. Just give me some time. Let me share the screen with Yeah, you. it's going to be a real quick one. We will not take more than 10 minutes on this. It's a fantastic product, all inclusive product with flights, visa cost, breakfast, lunch, dinner, which could be Indian meals. We can offer Jain meals in this product. So product बहुत अच्छा है, breakfast है, lunch है, dinner है.
मस्ट सी साइट सीइंग्स इंक्लूडेड है, एंट्रेंस टिकट्स इंक्लूडेड है, फ्लाइट्स इंक्लूडेड है फ्रॉम दिल्ली. तो प्रोडक्ट इज रियली गुड. I think here's I the think the screen is presentation. visible now. Yeah, you can do a present slideshow. Yeah, cool. It's visible. Yeah. Valerie, over to you. Okay. Okay. In the next 10 minutes, I'll speak about our group departures. Group departures, which are fixed departures, which only means we have flights included, visas included, accommodation, tour manager services, and all meals included. Okay. What you see on the screen is a list of our products. We have 8 products in total, starting with a very budget product, Amazing Europe, for 7 nights and 8 days. Here we are covering 2 nights in Paris, 1 night in Netherlands, 1 night in Germany, 3 nights in Switzerland. Moving forward, we have highlights of Europe for 9 nights and 10 days, a complete Europe package covering 2 nights in Paris, Switzerland, Austria, that's Innsbruck, Padova, which is in Italy, Rome, again Italy, and Tuscany, Italy, 1 night. We also have European Marvels. Duration is 12 nights and 13 days, covering Paris, Netherlands, Germany, Switzerland, Austria, and last 3 nights in Italy. We have Best of Europe, that is our longest duration for 14 nights, 15 days. It is a variation of the previous European Marvels product with an added 2 nights in London. So we start with London for 2 nights, continuing with the same itinerary as European Marvels to make it 14 nights and 15 days. Next, we have a sensational Scandinavia, 8 nights, 9 days. Here we are covering all 4 countries of Scandinavia. We start with we start with Helsinki. We have an overnight ferry moving to Stockholm, a flight to Bergen, JLO, Oslo, an overnight ferry back to Copenhagen. That makes it 8 nights, 9 days. We'll move to the next slide to see our balance, the rest of the 3 products. We have added Amazing Turkey, which is a perfect 8 nights, 9 days, which is an ideal duration for Turkey, covering Istanbul, Cappadocia, Antalya, Pamukkale, and back to Istanbul, where we return from. And our last two products are for South Africa. Now, these 2 products are for 9 nights and 10 days. Identical products. The only difference is the first product is with the Kruger Game Reserve, and the second variation of South Africa is with the Sun City. Duration would be the same. We are covering Cape Town, Nyasa, either Kruger or Sun City. We end in Johannesburg. We'll move to the next slide to share with you the key features of our products. Like Faizan mentioned earlier, we are having flights included, and flights would be from our major hubs, that is Bombay, Delhi, Chennai, Kolkata, Hyderabad, and Cochin. And in certain packages, we also have Trivandrum included. We have the major sightseeings covered up that we are offering. So basically, whatever a client should see is already included in our package. Our hotel categories would be 4-star starting category. Meals are included, and we'll, along with vegetarian and non-vegetarian, we'll also be catering to the Jain meals. And wherever it's possible, wherever it's possible for us to arrange Jain, which should be like 80-90% of the tour, we would be providing Jain meals. However, in certain cases, wherever there are local meals and it is not possible for Indian meals, we'll have to brief our clients accordingly. But majorly, Indian meals, which is covering vegetarian, non-vegetarian, and Jain meals would be included. Okay. Visa services, of course, visa services would be included, and this can be catered to from where your clients would be flying from. So irrespective of whichever hub they are flying from, visa can be taken care of from our office in Mumbai.
All the tours will be operated through AC car coaches. Of course, we'll be having a tour manager right from the airport to airport services. This will be an English and an Hindi speaking tour manager for your client's comfort. Our departures are operating based on 35 to 40 seats each departure, which only means that it'll be the best option for you if you could complete a whole departure. And we also have an option of white labeling it, which means this would not be operated under the name of European Journeys or Akbar Anywhere. It is possible for us to display your agency name. For that matter, our tour manager can also wear your agency t-shirt. So white labeling is possible if you're taking a complete tour of 35 to 40 passengers. Okay. What you see on the next screen now. Okay. This is the product pricing. Like I said earlier, Amazing Europe is the most budgeted product we have in our Europe series, starting 1,89,999 on double sharing, per person on double sharing. And the highest being Best of Europe, 3,45,999. The reason being, we are, other than Europe mainland, we are also covering London added in it. Take a look at our sensational Scandinavia tour, 2,79,999. Now, all the prices that you see on the screen are gross rates, which means they are commissionable to you, to the travel agents. I'll cover up the TAC portion in the next slide. Yeah. The travel agent's commission would go this way. 4 of our products, European Marvels, Best of Europe, Highlights of Europe, and Sensational Scandinavia. The first 14 passengers you book with us, we'll provide you a commission of 5,000 per passenger. The moment we increase this passenger count to 15 passengers plus, the same 5,000 per passenger commission structure would change from 5,000 to 8,000 per passenger right from the first passenger. Likewise, 35 plus passengers would fetch you 10,000 per passenger as a commission. So the idea is the more you book, the more commission you can earn based on which slab you fall under. But this portion is this TAC structure is applicable only for the first 4 products. Coming to Amazing Europe, Amazing Turkey, the middle section that you can see here, it's a flat TAC of 5,000 per passenger, and the South Africa will fetch you 6,000 per passenger. Okay, I hope we are clear on the TAC part. Any questions on the TAC? Are there any questions on the TAC? Nebo, somebody is asking you to unmute them. I'll address the questions once they come to me. Meanwhile, the last screen that you see is are the contact details of our holidays team. We have a standard single point of email ID for all our inquiries, fit@akbartravelsonline.com. This is displayed even on our portal. This is the WhatsApp number, and take a note of our landline too. Valerie, yes, I'm trying to unmute everyone, but before that I need to mute and then unmute. 1 sec, please. Allow participants to unmute themselves. Okay, I think now can you check? It is not allowing me to
Unmute everyone. I'm sorry. It doesn't allow me to unmute everyone. Excuse me, madam, you are listening to me? Yes, you are audible. You are ओके audible. ओके मैम, जब हम बुकिंग करने जाएंगे हमारे पास सो मेनी क्वेश्चंस होंगे आपके रिलेटेड, और हम ये चाहते हैं जब आपसे डायरेक्ट कॉल करके आपसे कंफर्म करें उसी टाइम क्लाइंट के साथ बैठे बैठे, तभी हमारा ये पैकेज डन हो पाता है। जब हम स्टार्ट करते हैं आपके जो आप कर रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं, इसके बाद सो मेनी क्वेश्चन दोबारा उठ जाते हैं। इसके लिए अभी हमें एक नंबर बताइए जो हम आपको साथ उसी टाइम कॉल करके उसको सोल्व आउट करें। ओके, ठीक है देखिए, अगर सुची। आपको यूरोपा मुंडो के बारे में कुछ जानना है तो आप या तो अकबर से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, और मैं अपना ईमेल आईडी भी आपको दे देती हूँ, ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर। यू कैन गेट इन टच विद मी ऑल्सो रिगार्डिंग यूरोपा मुंडो। बट अगर आपके इनके डायरेक्ट पैकेजेस के बारे में कुछ जानना है तो वो फिर आप डायरेक्टली इनसे चेक कर सकते हैं। Regarding the fixed departures or any other FIT package, Sarji, the same email ID that I mentioned, the contact number, that is the WhatsApp and the landline, you can use the same and pass it on to your team also. Somebody just asked me where I can get the detailed itinerary. Nabu, could you open the second document I gave you Okay, one on sec. WhatsApp? One sec. Now, here we have not gone through the detailed itinerary because it will be difficult for us to complete 8 itineraries day-wise. I'll just give you a short brief. I understand a day-wise itinerary is very important. Basic details like travel dates. In fact, all our departures are ranging right from the month of April till October, November. We'll give you a summary of it once Neponita is able to share it on the screen. Yeah. Okay. What you see on the screen is a brochure we have made. That brochure can be passed on to you without Akbar's logo and details. You can use this with your clients. All the travel agents can use this with our clients. Nabu, if you could go to the next page. The first 2 pages are basically a summary of what we spoke and all our 8 products. Yes, Nabu, that would be fine. The rest of the pages have a display of basic highlights of each of our products. For example, what you see right now on screen is European Marvels. It gives you the duration, the countries covered, the city-wise breakup, as in which city has how many nights in it. The travel dates are mentioned, right, with the dates and the month. Your departure hubs will be mentioned. And if you could scroll a little down, we have all the prime sightseeings in one go, along with the map on the right side, basically, which gives you a routing from where the tour starts and where it ends. Bottom of the page will have the pricing. Now, like I said earlier, this pricing is the gross pricing. It is commissionable to you. TAC will be applicable as I explained earlier. We can pass on this brochure to our travel agents, and basic details is something you can you can use this more like a sales tool with your walk-in clients. Other than this, if you want the document, a complete document, a PDF of 8-pager, 9-pager, a document of each of our product, that can also be given to you once I get the email IDs. So this is what it is. If you could slowly scroll downwards, Nabanita, for them to take a look at what our brochure looks like. You can keep this handy with you when your clients are around.
If not the day-wise itinerary, at least the key features is what you can highlight with this. Meanwhile, while you take a look at this, I'll quickly wind up the session stating that our Akbar online portal also has a holiday section. I'm sure most of you must have been on it. All these 8 products are on display along with the detailed itinerary on the same portal. Take a look at it. It is mentioned under the fixed departure column. So basically you just type in international fixed departures, you'll be able to see all our 8 fixed departure products there. All these contact numbers and email ID are also on display there. We have a team of 6 to 7 people catering to fixed departures. If at all you need help in terms of connecting with the clients where you are not able to explain something and you need to get on a con call, my team can talk to your clients on behalf of you too, on a con call, I mean. So this is what it is. 8 products, a lot of seats to sell around, operating by 35 to 40 seats per date, basically per departure from different hubs. Faizan, you want to add anything to this? Nope, that's it. We will ensure that these brochures are shared to all the participants and the travel agencies through our sales team, along with the escalation matrix. So that is about it. Just want to, if there are no questions, I'll go ahead and say thank you to the entire sales team and all the agents who have participated in this webinar. Thank you for all your support. Thank you, Nabonita. Thanks, Valerie, for filling in at the last minute and supporting this throughout. There's another email ID that has come on the chat. So sales1@tripcult.in. So if you can save that as well. So thank you very much. Thanks a lot, Nabonita. Thank We you so can much. end the session. Yes, great. Thank you, sir, very much for your support, Nabo. Thanks a lot, Val. Thank you, Madan and team. Thanks a lot. Bye bye. Thank you, Bye-bye. Nabo. Thanks, Faizan. Okay, bye ji, bye.